uploaded before 11:59 PM. आज के 11:59 से पहले आपको कंप्लीट करना है, ये चीजों को अपलोड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात. So like this, we have 4 sessions in a day. In my session also, there are resources has been uploaded and activities has been uploaded. कुछ activities मैं आपसे यहाँ करवा दूंगा. So like this day goes on and on up to 6 days, up to the last date of the workshop, which is on 26th. And as I told you also, 26th, the session lasts up to 5:15 in the evening. There is no valedictory session. Okay, the resource person will take the class up to 5:15 and we'll say bye-bye, we'll wind up. Why? Because from next day onwards, the 27th of April onwards, the 30 days online mentoring will start. What is this online mentoring business? We will be giving you, probably not today, tomorrow I will be giving you, I'll discuss with you a project which you have to complete that project. You have to complete that project and using your real-time data, and you have to submit that project with a valid proof of evidence. So what is the format of the project? How it has to be completed? What are the things to be taken up will be explained to you during course of time. What all the factors which we will be explaining to you today, starting today, till the 6th day, you had to incorporate all these things in your project. And not only that, simply it is not a statements there. You have to prepare a videos. That videos has to be incorporated there. How to prepare, and when you need to prepare the videos with the learner-centric approach. You need to prepare with videos with experiential learning supporting, so many things. All the things we'll be covering during course of time. During the 30 days of online mentoring and support, if needed, basically the doubts will be clarified in the Google Classroom if you raise the questions. But if you still required our online presence needed, we don't mind to take 1, 2, 3 of online classes in the evening, which is suitable to you and me also, my team also. ये तो क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की वाली बात नहीं. आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो फर्स्ट लेवल पे हम इसमें करने की कोशिश करेंगे. यस रितु बाला, आपने रेज किया, बताइए रितु जी, आपसे कुछ पूछना था. Yes, sir. Actually, I have just seen the activity session activities. So there have been mentioned about a template, but we have not received any template during that sessions. Firstly, sir, that was my major concern. And No, secondly, what is your major concern, Ritu? First of all, sir, session activity in the Google Classroom, a which template day? has Which day been you are provided. talking? Which day you are talking? Sir, today only. But In the अरे first, आज first तो session, 4 sir. नोट कंप्लीट हुआ है. Sir, रितु first session. रितु रितु एक मिनट, मैं समझ गया आप जो क्या पूछना चाहते हैं. मैडम, टुडे इज 21st April and we are in the afternoon session. Only once the afternoon session has been completed, by the time for today forenoon will be activated. Okay, then afterwards afternoon will start. Afternoon will be completed by 5:15. By the time that will be activated, don't worry. Next. So it means we have to work beyond that hours बिल्कुल जी, and plan बिल्कुल करना है. and for all the activities in the short span of 4 hours or एक 5 hours. सेकंड, एक सेकंड. And one more point is, many of you must be preoccupied and you'll be feeling that 6 hours is too short. रात को कंप्लीट करना है. आपके लिए तो 30 दिन का समय हम दे रहे हैं ना. And you complete all the day wise activities, project activities. If you do not find time during the workshop dates beyond 5:15, you complete these activities within 30 days, then upload those activities. So Okay, sir, after the 37 days, and if everything goes well, you will receive the certificate automatically into your mailbox. and sir, one more concern. After the training, we have to at least give something
to our parent institutions that we have joined here. हम And we will आपको enroll there. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो 6th डे दे रहे हैं हम लोग. Okay, ठीक है सर. ओके 6th डे. ये सारे डिटेल्स हम आपको गूगल क्लासरूम में बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं. And And Ritu, this is not the first time I am conducting this workshop. I know, sir, but And, we and are don't worry, don't worry. but we are आपको taking it आपको for the first and time, sir. या नो नो आपको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से है ना? जी सर. हाँ तो आपके Actually, I have scheduled my classes before and after the workshop because I have to take them because of completion of the syllabus. No problem, no problem. I completely agree with you. Don't worry about that. And on last day, and my team will be sending you the participation certificates, and completion will be received only after 37 days, after you submit the assignments. And the participation certificate will be received. Yeah. Okay, thank you so much. Welcome, welcome. And my request is, don't worry about too many things. Participate, focus on the workshop. You will definitely enjoy this workshop at the end of the day. Okay, please. So, friends, that is the very important point to be noted down. And उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज होंगे, कैसे कैसे करना है, वो सारे चीज ड्यूरिंग द वर्कशॉप के दौरान अलग अलग सेशनों में हमने प्लान कर रखा है. And to the benefit of the Pan India participants, and some of the little bit of Hindi also will be adding into that. So and our resource persons were very clearly told इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. And most of the time you don't feel it as we are speaking in a language which is not alien to us, because all of us are comfortable, because the AI has its own language. So that is that we need to understand more about that language rather than the other part as such. Okay. So these are the instructions, and please ensure that all of us should join the Google Classroom, and all of us must have joined the WhatsApp group. And of course, the Google Meet link will remain that 6 days as such. Yes, Chitrangada Mohapatra. Any question? Yes, sir. Yes. No, sir. No, sir. Please Yeah, go. you raise the hand. Madam, usko down bhi kar lijiyega. Okay. Right. Friends, I think I will start my session today. These are the doubts, and doubts keep coming. Don't worry about that. And we are here to solve the doubts. And उससे ज्यादा बहुत सारे मैंने पहले से भी कहा था, अभी भी दोबारा मैं कह दूंगा. Don't worry about too many things. And whatever best it is possible, try to learn the things, and we'll see what best can be done beyond that. Okay. Now, we have you must have seen in the timetable which has been already uploaded to you. So I will be dealing with some of the interesting sessions. One of the interesting session which to start with, because we are all teachers, and some of you could be would be teachers, like research scholars are there. They may be intended towards the teaching purposes also. And again, one more thing, some researchers are also there. Some of the retired persons are also here. There are so many people are there, and because some of them show the interest very seriously, so we gave interest for them. So the point, what I'm trying to say that, but assuming that all of you are teachers, so I start this session with this first topic. The topic, this title of this talk has 4 to 5 important things. Okay. First one, if you look at coming from the bottom part, blended learning environment. So what is this blended learning environment? I think today morning Professor Narasimlu sir must have discussed with you. And why blended learning? Up to this, these two things are fine. But what is more I'm going to discuss is how to create that blended learning environment. What are the steps to be taken, and how do we ensure that that blended learning could be helpful? Now, going back to the first two sessions, Kotesarao Garu, it is already there in the WhatsApp, in the Google Classroom, sir. It's already there in the Google Classroom, and I request all of you, please go through that. Yeah, I'll explain. I request my team to do the needful, but I request all of you, please check it in the Google Classroom. It's already there, sir. So now, before that blended learning, there is something called learner-centric. Okay.
So what is this learner centric? What constitutes of this learner centric? Why learner centric? And very importantly, how do we create this learner centric environment? Probably these are the two interesting sessions because we are all teachers, we had to ensure all these things as part of the NEP 2020. Now go back to the first line. At the end of the first line, there is a word called design. So these environments cannot be created just like that. And unless and until we are not conforming, we are not confident enough, we cannot take up this matter directly into that. So you need to design it. So to design, what are the steps to be taken? And what are the technical as well as the, and of course, now I'm coming to that. So what are the skills required? There are two types of skills, I said. One is a digital skills, other one is an AI skills. Of course, even though this workshop is focusing on AI skills, yes, digital skills also. AI cannot work in isolation. That's one of the very, very important things. Second point, and because anyway, I'm going to reiterate this one a number of times during my talk, and my team is also selling the same thing. This technology is to facilitate the teachers, empower the teachers, and to teach something differently, but not to replace the teachers. And nowhere we have been saying that this technology is replacing the teacher. Technology is an enabler. Technology is a facilitator with the digital skill as well as the AI skills, whatever it may be. But it's not going to replace it, very, very importantly. And I'm going to say in a number of words. Then, of course, these skills need to be developed. And overnight, it cannot happen. And as you must have seen in this workshop, we are going to focus on these AI skills, starting from the teaching, learning, assessment, pedagogy, and as well as the research. Tomorrow, you'll be having two excellent sessions by one of our own faculty, Professor Pradeep Mishra, on AI integration into the research part also. Okay, so this is about that. So we start with the blended learning. Then afterwards, we have something called learner-centric. These things has to be designed. And of course, with the help of AI skills and non-AI skills, how these things need to be done. Okay, so let me start showing with the example. This is an example of Professor K. Srinivas.in. This is a, हाँ पंचाल जी कोई बात नहीं, हम बीच बीच में हिंदी में भी बोल देंगे. आप, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ यार, आपका तो समझ में, आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं भाई, तो हिंदी में ही वार्तालाप चल रहे हैं. आप चिंता मत करो, भाषा का भावनाओं को समझने की कोशिश करो. भाषा तो एक जरिया है, ठीक है. ओके रितो, डोंट वरी अबाउट दैट. भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ठीक है. बट ये मत पूछना भावना कौन है. भावना हमारे घर की माई है. बार बार इनका नाम लेता रहता हूँ. No, I am not doubting. I am just enjoying. Okay. So ये जो पोर्टल है, जो जिस पोर्टल आप लोग देख पा रहे हैं, so that I'll mix up both the things, not worry about that. ये जो पोर्टल आप लोग देख पा रहे हैं, and this is a portal, a live portal, which I have been using for the last almost 18 plus years to facilitate the learning of my learners beyond the conventional classroom and schedule. Okay, इसका लिंक भी मैं आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप आराम से बाद में भी देख लीजिएगा. और इसका लिंक, अच्छा यहाँ एक और इंटरेस्टिंग वाली बात है, जब भी हम लोग कोई भी चीज यहाँ डालने की कोशिश करेंगे और उसको पिन करेंगे. एक सेकंड, मैं जरा इसको कॉपी कर देता हूँ. प्रोफेसर श्रीनिवास, ये लिंक को हमने पेस्ट कर दिया था. एंड आप, सो दिस लिंक बेसिकली फैसिलिटेट्स माय स्टूडेंट्स टू लर्न बियॉन्ड द क्लासरूम. क्लास के बाहर, क्लास का मतलब मैं ये चार दीवारों के बीच में जो क्लास को मैं क्लास ही को नहीं मानता था. I do something beyond. This is where I'm going to take you that blended kind of environment. तो ये हम आपसे करवा देंगे. ये 6 दिन के अंदर आप सबको ये मिलेगा कि how you create this kind of environment. यहाँ एक ही चीज है, तो मैंने इसको डोमेन को रजिस्ट्रेशन कर रखा है, बस वही वाली बात है. ओके,
So all the resources other than the Google Classroom will be available here in this portal as such. This is one of the example. There are so many examples. Nipa got the blended learning environment. So many things are there. So this is about one of the example for this. But इस example को ये तो technically आपको दिख रहा है. इसके पीछे क्या करना है? What are the things are expected to be done? All these things I will show you during course of time. So the breakdown के लिए मैंने आपको पहले ही कह रखा था कि तो what, why, how, and my breakdown is always like this. Developing the AI skills, why, to design learner-centric blended learning environment के लिए, and how is very important. Applying the AI skills to create effective, personalized and blended educational experiences. ये बातें कहाँ से आ रहे? Learner-centric, blended, online, ये सारे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के requirements के मुताबिक ही है. तो these are the some of the learning outcomes of this particular session. ठीक है. Now one point मैंने आपको पहले ही कहा था कि you must be, कोई पूछा नहीं था मुझे सर इसको 4 भागों में क्यों बांटा था आपने हर क्लास को. इसका एक कारण था. Because generally when we give a lecture, everybody will enjoy. Generally we have a habit of switching off the cameras and watching it. People are saying that नहीं sir bandwidth खराब है, यहाँ ये खराब है, वो खराब है, and that's one. So we may forget it. Second point, what I said, apart from lecture, we are going to give some discussion and demonstration. And demonstration, you may understand some of the things. That's the second point. And when we involve you, your understanding will be better. The involvement of you, we did in 3 levels. एक, मैं classroom में, हमारे 90 मिनट के क्लास में आपसे छोटे छोटे एक्टिविटीज करवाएंगे, नंबर 1. और गूगल क्लासरूम में कुछ एक्टिविटीज हम आपको देंगे. वो अभी मैंने डॉक्टर ऋतु बाला को मैंने बता दिया था कि 6 दिन के अंदर अंदर नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं. आप अगले 6 दिन के बाद 30 दिन का समय आपके पास है और 36 दिन के अंदर अंदर आराम से कर लीजिएगा. सो यू काइंडली कंप्लीट इट विद इन 36 days एंड देन being a program director, I will see everything is goes well. 37वें दिन के बाद अपने आप सर्टिफिकेट आपके पास अपने मेल में आ जाएगा. That's all. तो वही तरीका हमने यहाँ अपनाएंगे. So conceptual understanding, knowledge acquisition के साथ साथ skill development पे भी हम importantly focus आपके लिए करेंगे. Okay. And where these things come, where these things have come, and what is the role of technology? Morning, Professor Narsimlu must have discussed all these things. But I focus on the middle वाले बिंदु, जो बीच वाले बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर एक बार रोशनी डाल दीजिएगा आप सब लोग. Requesting the participants to look into the middle point which is there on the screen. A very important policy direction, friends. Enhance education quality and reach. जी बिल्कुल मैम. So what it is says, the policy envisions, first of all, technology को use करके quality के लिए आ सकते हैं. Reach of education is very much possible, and relevance, increase of access, equity, promote innovation, creativity. ये सारे बातें तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. But what is important is technology को integrate करके क्या हासिल करना चाहते हैं. This is very important. अदरवाइज क्या होता है कि भाई जैसे कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर साइंस में एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट. बट ये वो वाली बात नहीं. यहां देखिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, सो द पॉलिसी एनविजन्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज ए मीन्स टू प्रोवाइड 6 essential things. Flexible learning experience to the students. So what is a flexible learning experience and how to achieve it? Second, adaptive learning experience. जय कुमार को एक बार भेज देना. Adaptive learning experience. Third one is personalized learning experience.
Fourth one, engaging learning experience. Fifth one, interactive learning experience. And sixth one, interesting learning experience. So flexible, adaptable, personalized, engaging, interactive and interesting. ये 6 चीज हासिल करना है. When we integrate the technology, so then the teachers need to be prepared. Technology means here I'll talk about the digital skills as well as the AI skills also. But again, one important point, AI cannot work in isolation. आपके पास कुछ डेटा कुछ तो होना तो चाहिए, तभी उसकी मैं अभी हम आपसे करवा देंगे कैसे कैसे किया जाता है ये सारी बातें. एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं कुछ करके दिखा दूंगा, and you can also see that how this process will be done. So this is what the National Educational Policy envisions in nutshell. Okay, the recommendations of NEP 2020 regarding the use of technology, I'll just rush through this because there are certain important points I want to discuss with you. The first one is, you all know very well, and 66 पेज का जो डॉक्यूमेंट, 66 पेज वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा. उसके अंदर ये सारे बातें जो कह रखा है, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन वाले, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो स्कूली शिक्षा को मैंने नहीं लिया था, ओनली उच्च शिक्षा को ही लेके मैं बात कर रहा हूँ. इसके अंदर थोड़ा बहुत स्कूली शिक्षा का आइटम्स भी आ जाएंगे. इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लर्निंग, फर्स्ट पार्ट, and let me run through this. Second one is online and digital education. Third one is talking about National Educational Technology Forum. Fourth one, teacher training and capacity building. Fifth one, digital governance and data management. Sixth one, promoting research in educational technology. Seventh one, bridging the digital divide. Eighth one, creation of digital libraries. यहाँ तक की बात है. So I'll go back once again. Creation of digital libraries, bridging the digital divide, promoting research in educational technology, digital governance and data management, teacher training and capacity building, National Educational Technology Forum, online and digital education, integration of technology in learning. In the integration of technology in learning, there are three important things are there. The first one is about the digital infrastructure. So the NEP 2020 emphasizes the creation of robust digital infrastructure in all educational institutions to support blended and online learning. First and foremost thing. So सबसे important interesting वाली बात हमारा ये है, so what is this blended mode of learning? What is this online learning? Okay, blended में आने से पहले let me tell you something about, so हमारे सामने 3 options है आज के तारीख. एक conventional face to face classroom, it is a synchronous mode of learning, offline है. ऐसा ही हमारे पास online classes है. देखिए, this is also synchronous but online. Synchronous asynchronous करके 2 भागों में बांट देते हैं. Synchronous में ऑफलाइन है, synchronous में ऑनलाइन है. Synchronous में ऑफलाइन हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम है, synchronous में ऑफलाइन synchronous में ऑफलाइन हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम है, synchronous में ऑनलाइन, this kind of programs. Then we have something called asynchronous. Asynchronous is not live. The best example is the Swayam courses and the Swayam Plus courses, and of course NIPA is also offering some courses in a blended mode. अभी मैंने आपको एक साइट दिखाया, मेरे वाली साइट जो है, it is a online platform but supporting asynchronous learning. That means that there is no live interaction there. Okay, examples are the online asynchronous. This is one example. The second example is about the Swayam Plus Swayam courses, and third example is this one.
You have something called Swayam Plus courses. These are all offering in online mode, but the mode of teaching is asynchronous. There is no live component over here. So may it be Swayam Plus or the Swayam courses, or uh, individuals have created this kind of an environment, or like this. Okay, so all these, any one of these platforms are providing that. So that is one. The second one, which is very, very important to all of us, is about the blended. So what is this blended learning? Read some things which is coming on your screen for a minute, please. Read for a minute. Some of the participants are calling. Call from my Geo number. Change it to Geo and call and response. Okay. So what it is coming on your screen is basically about the blended learning, and the National Educational Policy recommends the adoption of the blended learning approach that combines online and offline modes of learning. So basically the process, because the reason is like whether it's same thing happens in a conventional, even online also, our learners are very differently there in the classrooms. There are slow learners. कुछ बच्चे जो है और एवरेज लर्नर्स है, स्लो भी नहीं है, फास्ट भी नहीं है. सम स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड लर्नर्स. तो हमारे क्लासरूम में 3 तरीके के बच्चे, स्लो लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं उन बच्चों के सामने. और दूसरी बात है, आपने भी नोटिस किया होगा, हर लर्नर का लर्निंग पेस अलग है, लर्निंग स्पेस अलग है, लर्निंग टाइम अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है. The learning pace, learning space, learning time, learning style different. So what is happening is, पहले तो हम लोग टीचर सेंट्रिक मोड में अभी भी पढ़ा रहे हैं, बट राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही डू इट लर्नर सेंट्रिक. शिक्षार्थी को क्या चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच में पढ़ाओ. उसके लिए ब्लेंडेड भी यूज करो, उसके लिए फ्लिप्ड भी यूज करो, ये सारे टेक्निक्स यूज करने के लिए कह रही बात. So it is so that the student can learn on their own pace, space and time, and they can learn anywhere, anytime. The policy is also emphasizing the need to ensure equitable access to digital resources and infrastructure for all the students, irrespective of the region, caste, street, whatever it may be. ऐसा कुछ नहीं. And technology, one such thing which is an equivalent for every one of us. Everyone should have this access to the wonderful resources as such which is being available there. So if you look at the policy statement about the blended learning, this is what the policy statement, our national educational policy has said very clearly as such. Before I moving further, I एक बार confirm करना चाहता हूँ, मेरे आवाज आप तक पहुँच पा रहे हैं और स्क्रीन पे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बहुत सारे Yes, हमारे sir. मित्र जो है कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा पूछना पड़ता है. नहीं सर, आ रही है आवाज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी. तो एक हमारे प्रतिभागी ने पूछा था कि सर ये कोई फ्री है. देखिए बात क्या है कि आपके पास अभी जो हमारे पास गूगल क्लासरूम, 2 तरीके का गूगल क्लासरूम, एक जो है फ्री वर्जन है, एक तो है पेड वर्जन. फ्री वर्जन में कुछ लेवल तक भी आप जा पाते हैं, एंड पेड वर्जन यस यू कैन गो समथिंग बियॉन्ड दैट. ओके, चलिए वो सारी बातें आगे आगे आपको बता पाएंगे. सो द पॉलिसी हैज बीन टॉकिंग अबाउट दीज फैक्टर्स. एंड सो व्हाट इज द ब्लेंड इन द ब्लेंडेड लर्निंग, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल मोड में तो आना है, थियरेटिकली हम तो सुन चुके हैं,
तो इसलिए 2-3 स्टेप्स के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली लेके आऊंगा. So blended learning is an instructional methodology, a teaching learning approach that combines face-to-face classroom methods with computer mediated activities to deliver the instruction. Okay, this is first part. The second part is, this is a pedagogical approach, means a mixture of face-to-face and online activities and integration of synchronous and asynchronous learning tools, thus providing an optimal possibility for the arrangement of effective learning process. Ultimately हमें तो ये देखना है. శాస్త్రి గారు మీకు మన సార్, ఆర్ యు దేర్ సార్? Hello. Yes, sir. Sir, I didn't get the Google Classroom link. That email I didn't get. No, sir. Actually, you are there in the Google Classroom, right? No, I'm not there. That's why I'm telling. Oh, from my Google Classroom, I should get a link now for your Google Classroom. Join. No, sir. Actually, we have already shared that link to you, sir. Just give me a minute. Just give me. Yeah. सर मैं चैट बॉक्स में भेजूं लिंक को? अरे हाँ वासुदेव जी, एक बार भेज दीजिएगा सर को. भेज. यस सर. అదేంటి సార్ మీరు లేకపోవడం ఏంటి? మా వాట్సాప్ గ్రూప్, మా గ్రూప్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే ఉన్నాం సార్, అంతే. ఇంక దీంట్లో లేదు. హర్షిత, can you hear me? Yes, sir. Are see, Professor Shastri could not able to not share all these details. Please ensure that sir should get it. Okay, sir. Yes, sir. Okay, right. Thank you, sir. Sorry for the trouble. No problem, sir. No problem. Yeah, Ritu, there is a small question from our colleague Ritu Bala. See, the question here is, there are two types of options are available. One is a synchronous, other one is asynchronous. Synchronous is live. Synchronous has two scenarios. One scenario is conventional classroom where teacher stands in front of you. I've also not received, please share it. सुधा जी देखो, आपके क्लासरूम का लिंक आपको दे रखा है. सुधा सिंह ऑलरेडी लिंक ऊपर है, देख लीजिएगा. So second scenario is, one is a conventional classroom, second one is this online platforms. Now this workshop, the lecture is going on in an online mode, and this is a synchronous learning environment. Coming to the second part, asynchronous. Asynchronous is not live. Asynchronous, like for one of the examples I said about Swayam courses. Swayam courses are offered in Swayam courses are offered face to face. In synchronous you have both. In synchronous face to face, synchronous online. But whereas asynchronous you cannot have face to face. It will be recorded. Sir, may I please? Yeah. Sir, but I have understood that synchronous means there would be interaction in a face-to-face mode, either online or in conventional mode. No. See, don't make too many states. They're simple. One is synchronous and other one is asynchronous. Synchronous has two scenarios. One scenario is conventional classroom where teacher is standing live and delivering to the students in a live mode. This is face-to-face offline learning environment supporting synchronous learning. The scenario number 2, online. In online, again using the online platforms like Google Meet, Zoom, Jitsi, Cisco WebEx, Microsoft Teams, we are ensuring a online live interaction. Like Dr. Ritu is there listening to me, and Professor Srinivas is speaking from my side. So both can able to interact. This is online platform, but doing synchronous learning environment. So then you have something called asynchronous.
अरे यार, एक शास्त्री जी है हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल का, सर के गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं मिला है। एक बार मदद करो, उनको फोन करके, फोन दे दिया मैंने अभी इनको, नायरा को फोन करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। So this is about the synchronous and asynchronous is one of the best example is not live, recorded material will be available. For this, I gave you 3 options. One of the option is the Swayam courses. It's an online platform, but everything you will get recorded facilities. It's mostly meant for the self-study mode. And similarly, you have something called Swayam Plus. The difference between the Swayam and Swayam Plus is Swayam is curriculum-based courses, Swayam Plus is the skill-based courses. And one more thing, as I told you that this is my learning platform. I am using for my students to support my students' blended learning environment. So this is one option, which is this is also termed as online asynchronous learning environment. Fine. So now the Swayam Plus courses has there are 2 options, Joy Prakash. There are paid courses, there are free courses, and the difference between the Swayam Plus courses and Swayam courses are they are all aligned with the National Credit Framework courses, and courses are starting from 20 hours, 40 hours, 50 hours, something like that, and there are paid and there are free. And there are 2-3 types of courses. Some of them are hybrid courses, some of them are online, the kind of thing. Okay, so coming back to this blended, so this is about the blended part of it. So what is not a blended? Read for a minute. What is not a blended? So what has been given here? Blended learning is not mere mix of online and face-to-face mode, but it refers to a well-planned combination of meaningful activities in both the mode. I think this is what we had to learn. Otherwise, please try to understand that that 6 essential elements I said: flexible, adaptable, personalized, engaging, interactive, and interesting. And people will not be liking your classes, and already whether we updated or not, that's the purpose of this NIPAS initiative, to train the faculty members on generative AI and interactive technologies. So because our students are already updated, so they're already one step ahead on us. So we want to create an environment so that learning can happen from both sides. Okay, so one point is this. Second one is the blend demands consideration of several factors, mainly focusing on learning outcomes and learner-centric instructional environment. Some of the things I will cover a little later. So this is not simply, I think last time किसी भी वर्कशॉप में मैंने एक मेरा जानकार था, अच्छा दोस्त था, मजाकी था ये, तो एक ने मैंने पूछा था कि आप लोग गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं? लोगों ने कहा हाँ जी सर हम कर रहे हैं। तो एक प्रोफेसर ने मुझे कहा हाँ सर हफ्ते में तो 2-3 दिन जो है ऐसे वीडियोस डालते। मैंने यार ऐसे वीडियोस डालते क्या मतलब है? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। सो नो, आई थिंक डोंट, इट्स नॉट अ मजाक, इट्स अ सीरियस मैटर एंड इट इज अ साइंस बिहाइंड दिस। सो मैं आपको और भी दिखा दूंगा क्या क्या चीजें करना है इसमें। सो इसको इनेबल कैसे करना है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। सो इस बीच में यूजीसी ने हमें एक नोटिफिकेशन भी भेजा था 60-40 रेशियो, इसके ऊपर भी कई सारे चर्चा है। मैं आपको कुछ 2-3 सिनारियोस भी आगे दिखा दूंगा। अब एक बार ये स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Teachers and institutions can ensure a balanced approach, even though 60-40 इन्होंने कह रखा है,
60-40 का 2 इंटरप्रिटेशंस है, मैं आपको दिखा दूंगा. Balanced approach to learning that takes advantage of the benefits of online and offline modes while maintaining an appropriate level of engagement in each. दोनों लेवलों में engagement होना बहुत बहुत जरूरी है. Otherwise, simply there is no fun of it. Okay, so online is important, offline is very important, no doubt about it. Online is also equally important. So we want to see that how effectively these two things can be done and what is the advantage one has to take in both the cases as such. Okay, so let me take you to that. When I click on there is a blended learning approaches and steps के बारे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ. Now look at this table. So as I told you that there are 2 scenarios are there. I have increased to 150% and please confirm that this is visible clearly on your screens. Yes, sir. Visible, sir. देखिए, Yes, sir. आपके सामने there are 2 scenarios हैं. Scenario number one is institutions adopted the MOOCs courses. Institutions adopted the MOOCs courses. So student earn 60% of the course credit, 60-40 ratio में adopt किया है. So student earn 60% of the course credits offline, of attending offline programs, and 40% through MOOCs courses. Okay, so in this model, the institution has formally integrated MOOCs into their curriculum. Okay, students complete a majority 60% of the coursework through traditional in-person classes, while the remaining 40% earned through completing the MOOCs courses. Very good, no doubt about it. Wonderful, excellent. But यहाँ एक अजीब सी स्थिति है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ. ये क्योंकि ये तो मैं हमारे नॉन परिवार में हुआ था, इसलिए ये बात बताना चाहता था. हमारे कोई कजिन की जो बेटी है, इनके कॉलेज में कहा रखा है कि भाई हम इस सेमेस्टर में आपका 2 कोर्सेस ऑनलाइन में ज्वाइन करना है. और इनिशियली उनको दिक्कत आई ABCID के लिए तो अपने आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर जोड़ना था, नहीं हो पाया. Finally, she could able to join the courses. And she called me once saying that what procedure need to be adopted to join the courses. I have explained to her what need to be done and how. After 1 month, one day I had been to her house to find out that what is actually happening there in their teaching and all. I asked her, आपका बेटा पढ़ाई कैसे चल रहा है? She said, हाँ अंकल जी पढ़ाई बढ़िया चल रहा है. मैंने कहा था कि आपका MOOCs कोर्स की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो her answer was not encouraging. तो उन्होंने कहा था कि आपने ज्वाइन करने के लिए कहा था मामा जी, मैंने तो ज्वाइन तो कर लिया था, मुझे कुछ करना था क्या? Hope you understand what is she saying. कई लोगों को समझ में आ गया, कई लोगों को समझ में नहीं आया. So what she said is, MOOCs आपने ज्वाइन करने के लिए कहा था, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, तो मुझे क्या करना था? मतलब मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूं, ये तो पिछले 3-4 महीने पहले की बात है. मैं हमेशा उस एग्जाम्पल को यहाँ कोट इसलिए करता हूं कि उसके अंदर पीछे कुछ कहानी है. तो मैंने ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने तुरंत इसको लड़की को क्या कहा था, मैंने कहा था बेटा देखो ये MOOCs कोर्सेस आर डिजाइन, डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू दिस 4 क्वाड्रेंट अप्रोच. मैंने कहा था MOOCs जो है एक सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग द सिंक्रोनस लर्निंग एनवायरनमेंट, और इसमें आपको कोर्सेज को आपको खुद पढ़ना है. और मैंने इसमें ये भी कहा था कि इसके अंदर आपके जो कोर्स कंटेंट जो है 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में है. इसमें वीडियो ट्यूटोरियल है और वीडियोस भी मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि वीडियो मतलब जो नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं है, और ये इंटरैक्टिव वाली वीडियो है और टेक्स्ट मटेरियल है. आप इसको नोट्स लिख सकते हो
और ये सारे चीजें मैंने इनको बता दिया। अब उन्होंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके वो समझ तो लिया, मैंने सोचा कि समझ गई होगी। उसके बाद मैं 1 महीने के बाद मैं उनके घर गया था to find out what was how is the status as such. So she said, Mama ji, the same answer she gave me. Mama ji, मुझे कुछ करना था क्या? मैंने कुछ किया ही नहीं. But then I asked her that what is the problem. So a few problems she raised. Before that, she what are the problems she said. तो मैंने उनको ये भी समझाया, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उस कोर्स को कैसे what are the things a student can supposed to do in this MOOCs courses. अभी Moodle environment में बनाया था इसको, MOOCs courses में क्या करना था. मैंने फर्स्ट पोर्शन ये में कहा था कि हाउ टू फॉलो द लेसन्स. कन्वेंशनल क्लासरूम में हमें तो पता है फॉलो कैसे करना है, बट MOOCs कोर्सेस के लिए देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल बुक इज देयर. हाँ, some institutions must have already developed the rule book. So I told her how to follow the lessons, how to follow the video lessons. मैंने कहा था all video lessons are prepared with PIP mode, picture in picture mode. There is a presenter available है, presentation चलेगा and narration will happen. मैंने कहा था कि इसको सुनना है और notes लिखना है. And then I told her that about the what is the homework, what is a test, what is a formative assessment, what is a summative assessment, इसको तैयार कैसे करना है, इसको अपलोड कैसे करना है, ये समझा दिया मैंने. उसके बाद नॉर्मल सब्जेक्ट रिलेटेड में डाउट्स जो है डिस्कशन फोरम में कैसे पूछना है, और नॉर्मल चैट सेशन में जनरल डाउट्स को कैसे पूछना है. तो ये जो चीजें मैंने इनको समझा दिया. शी सेड no, she agreed, understood kind of a thing. And before concluding, I told her very clearly that these courses, this is not a teacher created, teacher explained these courses. These courses are, these are all programs offered in the Swayam platform. Swayam platform is meant for the curriculum based. Usme whatever course you have joined, it has got the 4 quadrants. One is a video tutorial, and videos have consisting of they're all part of the PPP and PPO mode. तो इन्होंने कहा था कि मामा जी मुझे 2-3 दिन का समय दे दीजिए. I think she took 3-4 days time, and finally she has one day she called me. She said, Mama ji, I could able to complete it. Then she has raised 5 important pertinent questions for all of us. She has raised 5 important questions for all of us. I think this is very, very important. All the participants attending the workshop should address this one. She said, first of all, she said, Mama ji, you told me that MOOCs courses are self-study courses, no problem. And there is a video component, there is a text component, and there is a discussion forum, there is an assessment. And what she said, when I opened the video component, and you told me, Amisha, I understand. I think anyway, this will be flagged at an appropriate point, surely. So, yeah, it is compulsory, madam. It is compulsory. All 4 quadrants should be there. All 4 quadrants should be there in each course. That's what I'm saying. मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ. आपके आंसर, आपके प्रश्न का जवाब मैं लेके आ रहा हूँ. इन्होंने ये कहा था कि मामा जी, आपने कहा था कि वीडियोस, आपने जो MOOCs में जो वीडियोस बनाएंगे, ये सारे फोकस्ड वीडियोस हैं और लर्नर सेंट्रिक वीडियोस हैं और ये इंटरैक्टिव वीडियोस हैं. मैंने कहा था हाँ बेटा, बिल्कुल सही है. तो इन्होंने एक वीडियो मुझे दिखाया. आप इस वीडियो को देख लीजिएगा. रिसोर्स पर्सन बोला जा रहा है, वो कभी कोई गैप भी नहीं है. नंबर 1, ओके, ठीक है. और बीच में मैं पीपीटी है साथ में, वो पीपीटी को मैं पढ़ के लिखना चाहता हूँ. आपने कहा था पीपीटी में तो 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड शी सेड देयर आर 15 लाइन्स, 15 लाइन है, 16 लाइन है. मैं कैसे देख पाऊं, कैसे लिखूं नोट्स. मैंने कहा था, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ऐसा सुन रहा था. और शी सेड, सर अंकल, ये आपने कहा था फोकस्ड है, शॉर्ट है, इंटरैक्टिव है, लर्नर सेंट्रिक है, इसमें से चारों चीज नहीं.
मैंने कहा था बेटा नहीं है, ठीक। देन शी सेड क्वाड्रेंट 2. ओके, सो क्वाड्रेंट 2 में मैंने इन्होंने ये भी कहा था क्वाड्रेंट 2 में मामा जी ये जो क्वाड्रेंट 2 इज यू से टेक्स्ट मटेरियल. Text material is in addition to the videos, supplementing to the teaching material. अच्छा, इसमें what she has noticed, she is a first year degree student. ये फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का होगा शायद, जब इन्होंने ये किया था, ये थर्ड सेमेस्टर का है. वो मुझे ये कह रही थी कि आपने जो टेक्स्ट मटेरियल है इसमें से 80% ऑफ द मटेरियल वर्ड फॉर्मेट में है. इट इज नॉट इन द PDF. वर्ड फॉर्मेट में जब भी कोई भी अपलोड होता है, व्हेन समबडी कैन डाउनलोड इट, आपके मोबाइल में तो आपके पास तो वो सॉफ्टवेयर होना तो चाहिए. PDF कैन बी ओपन बाय एनीवेयर. ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं है. नंबर 2. सेकंड पॉइंट इज कई सारे लिंक्स काम नहीं कर रहे हैं. अभी किसी ने मुझे बोला भी था, शायद अमित शाह ने कहा था, लिंक्स काम नहीं कर रहे हैं. अब ओके. नंबर 3, वीडियो, कई जगहों पर वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट डाल रखा है, जो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट डाल रखा है. एंड शी सेड ऐसा ही होता है क्या MOOCs कोर्सेस? आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग. मेरा और मेरे भांजी के बीच में जो वार्तालाप जो है ना, मैं आपको बता, और इस कोर्स ऐसे वैसे बंदे ने नहीं बनाया. एंड वेल having certain stature person has prepared it. Fair enough. Number 3, she said discussion forum. And he said, Mama ji, आपने कहा था discussion forum is a collaborative learning environment where doubts of the students will be answered. I have uploaded one doubt 72 hours before. 72 घंटे पहले मैंने लिखा था, but अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया. Why? And there is no answer for me. But and finally, assessments. She said, whenever my sir or madam conducting the assessments in the ऋतु में क्या बताऊं, वो वैसे मेरे भांजी है. I have faced the same situation with another person, and I was not having answers because we are not maintaining quality in MOOCs. So we were there speechless. So it's a reality, accept it. It's a reality, accept it. But क्या कैसे द्रोणाचार्य जो है अर्जुन को कहता है कि भैया तो कैसे तीर मारना है, पर द्रोणाचार्य भी युद्ध लड़ा था. तो बट लड़ना है ऋतु को, लड़ना है अनिता को, लड़ना है कैलाश को. श्रीनिवास तो एक द्रोणाचार्य करके ही रह जाता है. हम बता देंगे 10 बार. अब ये सारे कोशिश हमारा यही है, इस वर्कशॉप का कोशिश हमारा यही है. We should not commit that mistakes. And finally, for the assessments also, the girl says, मामा जी हमारे क्लास में जब भी एग्जाम वगैरह होता है, फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, या आजकल तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो भी कर रहे हैं, सो उसका कम से कम एक आध एग्जाम्पल्स दिया जाता है, बताया जाता है, करवाया जाता है फेस टू फेस क्लासरूम में. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एकदम से ऐसे कह देखा है. अपने उनके मन की भावना तो कैसे मैं समझूं, हमारे जिन्होंने बना रखा है. मैंने कहा था कि मैं सुन रहा था और कुछ जवाब नहीं दिया. लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था, अंकल जी आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बट व्हेनेवर वी आर saying there are two platforms here. One is a offline teaching, conventional classroom teaching, where 4 courses are being taught. We are attending. उसमें से 1% भी our teachers are not using this online components. That is where actually I want to talk about that scenario number 2. Second point is if the teachers could not able to complete these things on the time, so ultimately there is no way to deal with them. First point is 4 courses are taught exactly conventional classroom mode. 2 courses completely online, where self-study mode. यहाँ classroom में teacher centric, there student centric, and of course learner centric, whatever it may be, the options are there. It's a self-study mode. But the point is, what she is trying to say, fine, of course this is a reality, we are accepting that, we will be definitely going to use it. But the question ये कह रही है लड़की, I think this is what we have to learn.
वो जो ऑनलाइन कोर्सेस के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे वीडियोस है, जैसे टेक्स्ट मटेरियल है, डिस्कशन फोरम जैसा एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन असेसमेंट के एनवायरनमेंट, व्हाई कांट वी यूज दोज एनवायरनमेंट्स इन द कन्वेंशनल क्लासरूम? मैंने कहा था बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो कह रहे कि मामा जी हमारे टीचरों को थोड़ा सा बताओ ना। जब आप बताएंगे, ये बात मेरे भांजी ने मुझे कहा था, मैं सच बता रहा हूं, नाम लेना नहीं चाहता इंस्टीट्यूशन का, वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस आर देयर, बट द प्रॉब्लम इज 135 करोड़ आबादी है इस देश का, और कितने लोगों को बता दो। अभी तो देखिए हम तो इतने सारे बातों को रखने की हमने कोशिश कर, द पॉइंट इज दैट दिस इज द कंसर्न ऑफ द इंस्टीट्यूट, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए मैंने आपके लिए सिनारियो 2 लेके आया। सिनारियो 2, सिनारियो 1 60-40, वेरी गुड। सिनारियो 2, currently institutions have not adopted MOOCs courses, बहुत अच्छी बात है। So currently current position क्या है? Teachers deliver 100% of course content in person mode। बिल्कुल सही है जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको सलाह क्या दे रहा हूं? So suggestion would be, तो आप 60% इन पर्सन मोड में डिलीवर करो एंड 40% ऑनलाइन में करने की कोशिश करो। वो 60-40 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है। कम से कम कोशिश तो करो। कोशिश करने के लिए नीचे प्रावधान इसके अंदर हमने दे रखा है। इन दिस सिनारियो द इंस्टीट्यूशन हैज नॉट फॉर्मली अडॉप्टेड MOOCs, but they have incorporated online learning elements into its teaching methodology। अच्छा, अब देख दूसरी बात है, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन सा काउंट होगा, कौन सा काउंट नहीं होगा। देखिए मैं काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां काउंट की बात कौन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं काउंट की बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। My students are, I think I'll be trying to answer the questions later. Please down your questions, Ritu, because let's try to understand this. Nobody told me to teach in this blended mode, but I've been teaching. Please try to understand. My purpose is, there are two important purposes. I don't know what level you people are sitting over here. There is a advertisement about launching the MOOCs courses. And May 15th or May 16th is the last date. Institutions were asked to submit the proposals. I think शायद है मेरे पास ही है इसमें, मैं अभी आपको बीच में दिखा दूंगा मैं। So how can they submit the proposal? Okay, leave about the routine things like it should go to the registrar accepts it. So, but academically, how many set of people are there with us? MOOCs course के जो 6 stages है, course planning and designing, then second one is learner centric pedagogical के साथ DDU, design develop and deliver। कोर्स डिजाइन के साथ करने के लिए हमें लोग चाहिए, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए लोग चाहिए, एग्जिस्टिंग कंटेंट को बनाने के लिए लोग चाहिए, डिलीवरी के लिए लोग चाहिए। देन कोर्स ट्रांसैक्शन वी रिक्वायर्ड पीपल, एंड टू प्रिपेयर द असेसमेंट्स वी रिक्वायर्ड पीपल, to motivate, engage and encourage we required people. There are 6 stages of MOOCs courses: course design, content development, course delivery. Course design, content development, delivery. Then course transaction, engagement of the learner. I think probably it is there here only. I just want to show you because there are many people may be interested. I just want to show you that. Look at the stages. Because simply it is not submitting the proposal. Submitting the proposal, anybody can do it. Okay, yeah, look at this. Hope everybody is following me. So course planning and designing. Are you going for UG level courses? Are you going for PG level courses? Are you looking for a research level? Then we have something called, of course, these two things also I added, certificate as well as the participate courses. Means I am looking for Swayam or Swayam Plus. Okay, Swayam only. So in that case, last two things will not come. And whether the course is a scheduled course. Scheduled course is having a fixed start date and fixed end date. Self-paced courses. Okay, self-paced course do not have an end. Then, of course, are you going to plan for a micro-credential course?
20 घंटे से लेके 80 घंटे तक है. Okay, and national credit framework equivalent. Then schedule course है how many weeks, micro credentials है how many weeks. Then comes the then course objectives. ये एक बंदा decide नहीं कर सकते. There's a team of people will be deciding this. Subject experts, you should have the how many experts will be there with you to work on this. To starting from course planning and designing, objectives, course curriculum, course outline, to prepare the course curriculum, to prepare the prerequisites, to prepare the learning objectives, to prepare the evaluation methodology. We required people. Okay, so number one. So that's the reason I said that why we require to teach in the direction. That's what one of the interesting in part. Number two, content. Content again, two types of things. Some content need to be developed, and because 40 modules are there, each module is of 30 minutes duration. So that is what the Swayam is going to pay. So content, and some content we can curate it. We have a session by Professor S.M. Khan on open educational resources. That's very, very important component. So here actually what are the things? What is the module number? What is the module name? Who is the content writer? Who is the video presenter? Who is the content reviewer? Who is the technical reviewer? ये सारे लोग हमारे पास है. That's what I'm saying. Okay. So use the existing content or developing the new content. That's very, very important. And then if that is the case, हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं तो बात बता रहा हूँ. मान लीजिए हम वीडियो वाले को अपनाएंगे. वीडियो वाले ये कहेंगे कि दिल से सर आप पीपीटी लेके आइएगा, पिक्चर्स लेके आइएगा. Then learner centric component अभी हमने टच नहीं किया था. I'm going to explain that what is that learner centric component. अभी आपने लड़की ने बोला ना, and the videos are too stale and pale. Nothing is there in that one. That's what it's not interesting to the students. So we had to add the learner centric pedagogical approaches. I will talk about that one little later. So that is point number 2. Then comes the course delivery. Where we are going to deliver this course? Yes, Swayam 2.0, Google Course Builder. So we need to get the exposure to the Google Course Builder also. What are the features of the Google Course Builder? Before Google Course Builder, you want to test that module, whether the video is working fine, whether the text is working fine, whether the discussion forum which we created is working fine, assessments काम कर रहे नहीं कर रहे. So though you required something else. So what is the advantage is you can test all these things with the Moodle platform. Genomio.com is one such option that is available. Canvas में try कर सकते हैं. Both Moodle and Canvas are freely available. Or in worst case scenario, you can go with the Google Classroom also. So that to test whether these modules are properly working, the flow is currently happening or not. Then comes the course transaction. In the course transaction, basically what we want to know, what all the components are to be transacted week wise. पहले हफ्ते क्या modules cover करेंगे, nature of work क्या है, उसमें क्या, then remarks क्या है, second week में क्या करेंगे, third week में क्या करेंगे, fourth week में क्या करेंगे. ये course transaction strategies है. Simply upload करने से तो नहीं होगा. Then comes the fifth one, course assessment and assessment preparation. What type of assessments are there? Assessments is to test the knowledge and to take him further, not to fail. यहाँ तो Bloom's taxonomy के मुताबिक knowledge level, application level, critical thinking level, analytical thinking level, or any and experiential learning nowadays. No, this is again part of that. So we should think of that. Then very importantly, the last point is how to engage the learner. How to engage the learner, how to encourage the learner, how to motivate the learner. Learner engagement, learner encouragement, learner motivation, बहुत important है. जब तक एक कोर्स कोऑर्डिनेटर को इन 6 सेक्शंस के बारे में पता नहीं है, तो वो बेचारा क्या कर पाएंगे. बस लोग अप्लाई कर रहे थे, हाँ नहीं 15th लास्ट डेट है, अप्लाई कर लो, पहले तो हमारे यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, आने के बाद देखा जाए, आने के बाद कुछ नहीं होता. So I think whatever it is there, so one of the best option for us is if you can teach some of the components in this online mode.
हमारे कन्वेंशनल क्लासरूम के कुछ कंपोनेंट्स ऑफलाइन मोड की जो कोर्सेज जो है, जो ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए जब हम कोशिश करेंगे, सो दैट विल बी एडवांटेजेस फॉर अस एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। यही बात मैं आपको बता रहा था। यूनिवर्सिटी ने नहीं अपनाया, हमारे महाविद्यालय ने नहीं अपनाया, हमारा विश्वविद्यालय ने नहीं अपनाया, तो क्या करोगे? बिकॉज टुमारो if you are an assistant professor, we are going to the associate professor, they are asking this. From associate to professor, okay, somebody is asking or not, but you have excellent content. You want to share the content across the India, so you can create nice courses, and uske liye bhi alag alag stages. So one of the interesting important step, what I am trying to say, that you can integrate some component of your conventional classroom in the online mode. Okay, this is one. How we can? Very good question. Now you see there are certain steps I had given. ये सारे ये इधर ही है, ज्यादा दूर नहीं. तो number 1, again, planning and designing a blended learning environment. Okay, so इसके लिए प्लान करना पड़ेगा. आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा. सेकेंड वन इज एडॉप्टिंग द लर्नर सेंट्रिक पेडागोजिकल अप्रोच. उसके अंदर भी वो तो अप्रोच तो लगाना ही जरूरी है. नंबर 3, क्रिएटिंग एंड क्यूरेटिंग द रिसोर्सेस. ओके, उसी से शुरू कर देंगे अभी. सो अप्रोप्रिएट डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी आपके पास होना चाहिए. नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंटली, मोटिवेटिंग, एंगेजिंग एंड एनकरेजिंग द लर्नर इन ए ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके, सो इन सारे चीजों को करने के लिए मैं शुरुआत करा दूंगा आप लोगों के साथ. let us start with something interesting, resources, because resources are very important for us. Resources are very important for us, and that too, you need not create any resource to begin with. I think that's what I mean to say, that because we want to encourage every faculty, at least very simple component, 10% of his conventional face-to-face course in online mode. Some providing some videos to the students either before the class or after the class. Some text material before the class, after the class. And use some this discussion forum environment. Kar lo. And use some online options are available. Online formative assessment tools are available. Summative assessment tools are available. For Central University of Haryana, only Swayam is allowed, Ritu. But whereas if you are from IIT or IIM, you can go with edX courses also. They are agreeing, and Future Learn, Coursera courses also they are allowing. But as far as traditional universities and colleges like us, we should go with the this one only, MOOCs courses only, MOOCs, Swayam and Swayam Plus. Okay, now coming back to the so where are these digital repositories are available? What options are available? So आपके सामने 4 options हैं. First one, digital government of India के digital repositories है. Second one, state governments के various digital repositories are available. National and international repositories are there, and the last one is open educational resources. We have exclusively kept for 2 sessions for OER. अच्छा, ये चीज मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आप सबको. यहाँ एक इंटरेस्टिंग वाली बात ये है, whatever we have been explaining to you here, how to access the digital repositories of Government of India, and accessing the national international institutions, accessing the open educational resources, you had to include in your project also. अभी जो जितने सारे अभी यहाँ, every session was mapped within your project file. Every session, whatever you are attending here, has been mapped in your project file. Okay, because in some cases I'll be asking you to use some resources available in the digital repositories of Government of India. You should use it. Okay, now coming to the, so before using, what are the skills required? Read for a minute.
What are the skills required? Read. First of all, we need to understand various types of digital repositories maintained by the, and again, all these things we may be using for the online component of the our course. Okay, so digital repositories maintained by the Government of India, state governments, national, international institutions, and the OERs. First point. Second, हमें क्या आना चाहिए? We'll try to learn how to access the resources available in these digital platforms. मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा, एक्टिविटी से करवा दूंगा. नंबर 3, चलो सर एक्सेस तो मैंने किया था, उसको डाउनलोड करना आना चाहिए, वीडियो के लिंक सेव करना आना चाहिए. ये छोटे छोटे चीजें हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दैट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेनी टाइम्स वी कुड नॉट एबल टू डू दैट. ओके, सो एक्सप्लोर. ये प्रॉपरली आया होता, अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था कि इसमें पीपीटी हो या वर्ड डॉक्यूमेंट हो, वो सिंपल लॉजिक क्या क्या चीज था, गूगल ड्राइव में डाला है, गूगल ड्राइव में लिंक देना नहीं आता है कई लोगों को. अभी सिंपल एग्जांपल, हम वी हैव बीन, मैंने आपको बार बार ये बता रहा था, those people who are joined this course, we have sent a mail. Okay, in that mail we ask you to join the Google Classroom. Okay, so you open your Google Classroom separately and you join our Google Classroom using that link. In the Google Classroom, WhatsApp link is available, Google Meet link is available, the day wise, session wise contents are available. Madhumita, please mute yourself. मधुमिता सिन्हा, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. ये है अवेलेबल. ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुश्किल है, ये नामुमकिन भी नहीं है. देखिए, मैं आपको दोबारा एक मिनट के लिए मैं दिखाना चाहता था ताकि एटलीस्ट वो कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए. देखिए, मैं ओपन कर रहा हूं मेरा गूगल क्लासरूम, इसका गूगल क्लासरूम ओपन कर रहा हूं. ओके, ये गूगल क्लासरूम का नाम हमने दे रखा है P2 नीपा PDP अप्रैल वाले. ओके, ये है अप्रैल 21 से 26 की जो है. इसके अंदर जब आप क्लासरूम में जाएंगे, जब इसके अंदर क्लासरूम में जाएंगे, सबसे टॉप में आपको मिलेगा गूगल मीट लिंक. ये लिंक कंसिस्टेंट है 6 दिन तक. ओके, एंड हमारे यहाँ ऐसे इस तरह का एआई सिस्टम है, बीच बीच में जिन्होंने बिना पेमेंट करके किसी को जोड़ दिया था और जो उन सबको हटा देंगे, उन सबको हटा देंगे. ओके, देन उसके नीचे देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है. ओके, उसके नीचे बाकी फीडबैक फॉर्म है, अभी एक्टिव नहीं है, ये 6ठा दिन एक्टिव होगा, ये अभी ड्राफ्ट मोड में है, मैं आपके लिए बता रहा हूं. और फाइनल प्रोजेक्ट वर्क एग्जाम्पल के तौर पे ये हम आपको पूरा सॉल्व पेपर दे दिया, मतलब इसको कॉपी करके पेस्ट ही करना है. ममता सोच रही है हाँ सर बहुत आसान है, सर का तो इतना आसान है. ठीक है क्या ममता? तो फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट कैसे करना है वो दे दिया हम लोगों ने. ओके, और फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, ये भी मैं आपको 15 दिन के बाद, मतलब ये 30 दिन के प्रोग्राम में दे देंगे. इंफॉर्मेशन गाइड ओपन है, पोस्टेड अप्रैल 17. लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स अभी किया नहीं क्योंकि लास्ट मिनट तक कई लोग अपडेट कर ही रहे. प्रोग्राम शेड्यूल ऑलरेडी हमने इसके अंदर पोस्ट कर रखा है. एंड डे 1 का इनॉग्रल सेशन है. अब देखिए हमारा टेम्पलेट ऐसा ही रहेगा. डे 1 सेशन 1, प्रोफेसर नरसिम्लू टुक द क्लास इन द मॉर्निंग. सो फैकल्टी प्रोफाइल, रिसोर्सेस, उनके सेशन का रिसोर्सेस ऑलरेडी अपलोडेड है. उनके एक्टिविटीज भी, एक छोटा सा एक्टिविटी मैंने कल दिया था, और एक्टिविटी सबमिशन सिस्टम.
and many faculty members. So you need not, if you could able to complete today itself after 5:15, no problem. और आपके पास तो 30 दिन का समय है ना प्रोग्राम के बाद भी, एंड ये कंप्लीट करो, फाइनल प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट करो. अच्छा, यहाँ भी एक और बात है, फैकल्टी कहते हैं सर 30 डेज कम है, 60 डेज लो. सर 60 डेज भी कम है, 90 दिन ले लो. जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट नहीं करेंगे, you will not receive the assessment, you will not receive the certification. ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ये नीपा में हम पिछले कई सालों से ये सिस्टम हमने आईसीटी प्रोग्राम से, बाकी का तो मुझे तो नहीं पता, तो बाकी भी हम करते हैं ऐसी बातें. नीपा में ये स्टैंडर्ड, इस तरीके का गुणवत्ता हम मेंटेन करते हैं. और सेशन वीडियो, सुबह सर का जो वीडियो जो है, आज रात को जनरली यूट्यूब इज गिविंग लिटिल टाइम, रात को 8 बजे या 9 बजे के बाद आज का मॉर्निंग फर्स्ट सेशन का वीडियो अपलोड हो जाएगा. कुछ लोग नहीं सुन पाया किसी कारणवश, तो वो ऐसा ही सेम थिंग डे 1 सेशन 2 एंड डे 1 सेशन 3 माई सेशन, वो 2 बजे से 3:30 तक का सेशन का. ओके, so faculty profiles, session resources, and session activity submission, and of course session video. Same thing day 1 का इस तरीके से करेंगे. day 2 का भी ड्राफ्ट मोड में ही चल रहे हैं. आज शाम को जैसे आप लोग घर भी जाएंगे ना, हम लोग भी घर भी जाके ये सारी चीज कर पाएंगे. हाँ, सेशन 1 सेशन 2 एक्टिविटीज सेम है ना सर? हाँ जॉयदीप, मैं यहाँ बीच में आपका जो आपको भी कोई टेस्ट करता रहता हूँ. यू नो व्हाट इज द टेस्ट आई एम डूइंग? समटाइम्स आई पोस्टेड द सेम थिंग ओवर हियर, बट जनरली देयर इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशंस आर देयर. So this is basically to infuse the confidence on our people. Okay, don't worry about that. So like this, friends, we have in our Google Classroom, where we'll be asking you to join, which has got all the information, the Google Meet link for 6 days. Okay, and WhatsApp group link, and many things are there. My request all of you is kindly watch it carefully and do the needful as such. Okay, so what is the skill required? Coming back to that digital skills, so explore how to effectively use, and then the content, where what type of content is available over there. Okay, before that, let me take you to one interesting thing. Yes. Okay, sir, I went to one of the digital repository called EPG Pathshala. Very good. So there, out of these 4 categories, हमारे पास 5 type of resources available है, होंगे उसके अंदर. Videos available है, text available है, e-content, audios available है, podcasting, images are available, and simulations are available. ये resources को आप essential reading material के तहत use कर सकते हो, or you may use it for additional reading material. Is it clear to you? The resources which are available in the in these 4 options. So where these resources are available? The resources who are available under this Government of India higher education and state government institutions and national or international institutions and open educational resources के अंदर जो resources available है, they are videos are available. Okay, and their text is available, audios are available, images are available, simulations are available. But basically my purpose is for the blended learning, and of course my team is going to tell how to create the resources. Basically my purpose is जो existing resource को use करना तो आना तो चाहिए, वो बात की बात है, बाकी चीज. Okay, हम हमारे खोपड़ी में देखिए, I think ऋतु भी सुन रहे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हमारे खोपड़ी में ये डाल रखा है कि Windows is very good, Linux operating system is difficult to handle, but when it comes to the purchasing of the mobiles, we go for Android, not with the Windows phones or iPhones. iPhones people are purchasing because it has come down. Okay, but again there are issues are there.
So my question here is, resources are already available. Videos are available. Text is available. Okay. I may use it for the core resources. I may use it for the core resources. I may use it for the additional reading material. Next. इसके बाद, okay. Sir, but and one more thing. Now teaching में हम लोग क्या करते हैं? Please try to understand this. So we prepare a lesson plan. We have a lesson plan in our mind. We were very clear about the expected learning outcomes. As per the lesson plan, as per the expected outcomes, whatever resources we downloaded, we can see ये कौन सा resource कहाँ fit होगा. Is it suitable for the basic level of understanding? Is it suitable for the advanced level of understanding? Is it suitable for the application level of understanding? हम टेक्स्ट बुक भी कोई भी चीज देते इसी तरीके से ढूंढते हैं. ओके, ये सारे कैसे कर रहे हैं? यूजिंग अवर ह्यूमन टीचर्स नेचुरल इंटेलिजेंस प्रोसेस. समझने की कोशिश कर लीजिएगा. अभी ह्यूमन टीचर्स के नेचुरल इंटेलिजेंस, ये एआई की जो बात कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो हम बात कर रहे हैं, इट शुड सपोर्ट द टीचर. It should support the teaching learning process, not to replace the teacher. No way, no chance at all. And I think we should speak the same language across this India. This AI or technology should support the teacher, should support the teaching learning process. गुणवत्ता के साथ, नवाचारों के साथ पढ़ाने में ये मदद करेगा. ठीक है ममता, मैं सही हिंदी बोल रहा हूँ ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ, नहीं तो पांचाल जी कहेंगे कि सर आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, अंग्रेजी बोला जा रहा है. हाँ नहीं, अभी मुझे भी उन्होंने एक इमोजी दिया था. ठीक है, तो गुणवत्ता के साथ, नवाचारों के साथ पढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी हमें टीचर को मदद मिलना चाहिए. स्टूडेंट्स आल्सो टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. ओके, आई फाइंड आउट अ वीडियो which is very good in basic level of understanding. Basic level of what? यहां नीचे देखिए, again 4 options है. Is it suitable to explain a concept? या ये आइडिया को समझाने के लिए काम करेंगे, या कोई स्किल को समझाने के लिए काम करेंगे, या कोई टास्क को देने के लिए काम करेंगे. I hope you understand. All these things, मतलब ये वीडियो जो है, is the video useful to explain a concept, useful to explain an idea, useful to explain a skill, useful to explain a task. ओके, ये चारों चीज. अभी तक जितने सारे चीज है, हम हमारे बुद्धि को प्रयोग करके, हम तो नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन टीचर के नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करके बना रहे हैं. अब इन सारे चीजों को एआई के माध्यम से करने की कोशिश हम लोग करेंगे. बस अभी तक मैंने एआई की बात ही नहीं किया था. क्यों? बेसिकली वी शुड नो दैट व्हाट वी आर डूइंग, अदरवाइज वी बिकेम रोबोट्स. एंड नाउ एवरीथिंग ChatGPT is doing, everything DeepSeek is doing, everything Mistral is doing, everything Llama is doing. Then ये भी कभी भी ऐसा मत कहना, ये शब्द ऐसे कहेंगे ना तो कल क्या होता है, हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, टीचर के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न लग जाएगा. लेट मी टेल यू, द एंटायर पर्पस इज टू सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नॉट टू रिप्लेस द टीचर. टीचर कैनॉट बी रिप्लेस्ड, टीचर कैनॉट बी रिप्लेस्ड, टीचर कैनॉट बी रिप्लेस्ड. वेरी क्लियर, इसमें कोई दोहराए नहीं मेरे लिए. बट ऑल दिस थिंग्स शुड सपोर्ट एब्सोल्युटली. बिकॉज अब देखिए 2020 से 2025 तक पता नहीं क्या क्या चीज किया था. अब इतना होने के बावजूद भी से कि ममता, एक प्रोफेसर श्रीनिवास कैमरा ऑन करके बैठा है, बाकी सब लोग कह रहे ठीक है यार, चाय का टाइम हो गया, सुनेंगे, बाकी चीज तो चल रहा है. ये चलेगा, हाँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं. हाँ, हमारे लिए आदत नहीं कैमरा ऑन करने का. हमारा शिवा भी कैमरा ऑन करके बैठा अभी. my point is that ठीक है, बट 25 to 30 ठीक नहीं है. याद रखिएगा, जब तक हम अपडेट नहीं, if you are not updated,
not upgraded, students will not sit in our class. I'm not saying that हमारे नौकरी कोई नहीं निकाले, नहीं, nobody is going to take out our jobs. No, that's not the one I'm saying that. Because students are already updated. If you go to the class, students look towards you. When we talk about on pale and stale जो video वो PPT है, उसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, हल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ऐसे वीडियो को many places faculty members are reading out the PowerPoint presentation. कनक शर्मा, मुझे पता है आप जानबूझ के कैमरा आपका बंद है. I'm going to complain to your boss. No, Kanak, I understand. No problem. No, sir, it's not like that. Really, it is not working. कोई बात नहीं. Sincere वो होता है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में तो होता है ये बात. ठीक है. मैं नोट कर रहा हूँ ये सारे बातें. Okay, sir. Don't worry. I'm just kidding it. हाँ, Because okay. otherwise तो एक क्लास को पूरा दिन चलाना मुश्किल हो जाता है. So the point is that, so this is what we were expected to do. ठीक है. Now next 2 minutes में what I am trying to say that, so where should we start? So there are, see, there are these are the government example के तौर पे मैं कह रहा हूँ. These are the digital and state government and central government initiatives. And one of the initiative is EPG Pathshala. We'll take something from the EPG Pathshala and we'll try to do it. Second, for national international institutions, PubMed Central, Accever, JSTOR, Europeana, ResearchGate, these are the excellent resources are available for us. Coming to the OER, we have 2 sessions from Professor Khan. As I told you that ये उसमें they will be talking about the open educational resources. ये देखिए स्क्रीन पे, क्योंकि उनका सेशन था, so I don't want to get into this one into this regard as such. Okay, and AI integration. That's what I'll be talking about. We will be talking, not I. We will be talking about what is this AI integration and so on and so forth. Where the AI will be integrated, what are the things will be integrated as such. Okay, so the digital initiatives are, first one is Swayam. There is a small activity I don't want to do. Swayam Plus is another digital repository. And Swayam Prabha, this is again one of the very important digital repository of Government of India. Now we'll be talking about the EPG Pathshala. I think we'll start from the EPG Pathshala. In EPG Pathshala, this is only for the practical purpose. Look at this practical component. I'll stop it here because it's almost 3:30. We'll break for the tea, and 3:30 to 3:45 we'll be taking a break of tea. So after we come back, the tea, so we explore that what is this EPG Pathshala, and we'll try to search the content. This is the outcome you have to submit in the Google Classroom, in this Google Meet. Okay, so how do we search it and how do we see it? Then finally, after doing these 2 things, what is the AI integration? How AI can be integrated? We'll be discussing that. Okay, let's break for tea. Have a comfortable cup of tea and come back by 3:45. Then we'll continue the discussion. Okay, Harshita, Chandra, are you there?